Don't cross your limits. I have not called you here for interrogation. You have to assist the court and don't try to oversmart. Your senior officers are sitting here. Your conduct is reprehensible, not only in the court, but also in the past, as transpired in the last date of hearing. We will come to that also. What role have you played in this matter? And how questionable your conduct has been in the past? We will let you know. Wait for your chance. Sit down. You have to galvanize all this machinery which is under your jurisdiction to ensure that this, whether she is living or she is dead, whatever it is, but you must reach to a logical conclusion. We record total dissatisfaction over the state of affairs, particularly in this district Guna. Mr. SP, now in a month's time you have come here. For a month you are here only. What I have said just now, have you heard it? Ensure that the work culture revives in your district. And Mr. Verma, you also ensure that in the entire Chambal and Gwalior division, things do not happen the way it happened in this case. I will keep it pending. And now you come, now you sit down. Mr. Raghuvanshi, now let me know what steps you're supposed to take now. Because so far it's all a trash, I should say. We should not get into this trash. Remove this file. Now you tell me what steps you want to take now. And now, just a minute. That SHO Akhand Pratap Singh, na? Yes, sir. He is the person. Abhay Pratap Singh. Abhay Pratap Singh. Yes. Call him here. क्या नाम है इसका? अभय प्रताप सिंह। कब से नौकरी कर रहे हो तुम? अभी कितनी नौकरी बाकी है तुम्हारी? माइक पे बोलो। 10 साल की सर। बाकी है ना? जी सर। क्या जितनी नौकरी कर चुके हो इसी प्रकार से करिए नौकरी तुमने? सर नहीं सर। बहुत दिन ये 3 फुट रह नहीं पाएंगे। हमने आपके बड़े ऑफिसर को बोल दिया है। ये जो हरकत करी है आपने इस केस में, ये किसी प्रकार से जस्टिफाई नहीं की जा सकती है। 15-15, 20-20 साल की सर्विस करने के बाद ये हालत है आपकी क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन का। और यही हम उन सब केस में करते होंगे जब तक कोर्ट का इंटरवेंशन नहीं होता होगा। आज तुम्हारी लड़की गायब हुई होती तुम क्या करते? कॉम्प्रोमाइज करवाते? सर मैंने कंप्रोमाइज कर नहीं बोला सर उससे। क्यों नहीं इंक्वायरी हुई तुम्हारे खिलाफ? सर हुई सर इंक्वायरी। कुछ नहीं हुई तुम्हारे खिलाफ इंक्वायरी? 2 बार हुई सर इंक्वायरी सर। वही एडिशनल एसपी ने करी? नहीं सर, एक बार डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी हुई है सर। वो इंक्वायरी में क्या हुआ होगा हम लोग को पता है। एक इंक्रीमेंट। इस प्रकार के तुम बिहेव करोगे पुलिस स्टेशन पे, दिस रिमाइंड्स अस ऑफ सच सिचुएशन व्हिच यूजुअली वी सी इन मूवीज। वो पुलिस थाना तो शायद आप ही ओन करते हैं। जी सर। है ना? नहीं सर, मैं उस समय पदस्थ था सर जब। नहीं आप लीजिए, आप वहां के बॉस हैं, सबसे बड़े अधिकारी पुलिस थाने के आप। उस समय पोस्टेड था सर, मैंने तत्काल FIR कराई थी सर। और ज्यादा बोलोगे तो और तकलीफ में जाओगे, क्योंकि तुम्हारा कंडक्ट रिकॉर्ड में दिख रहा है हमको। अब वो तो तुम्हारे SP और तुम्हारे IG साहब या DG साहब डील करेंगे तुमसे। अब ये मैटर पेंडिंग रहेगा अभी यहां पर। लेकिन अपनी हरकतें सुधार लो, नहीं वाकई तकलीफ में आ जाओगे तुम। अगर हमने दोबारा सुना
कि तुमने इस तरह की हरकतें करी हैं, तो शायद हम ही तुमको यहां से ऐसा ऑब्जर्वेशन दे देंगे कि पुलिस फोर्स को तुमको नौकरी शायद निकालना पड़ जाए। क्योंकि अगर एक पुलिस ऑफिसर कल्प्रिट के साथ बैठ करके और विक्टिम के फादर के साथ डील नेगोशिएट करने का एलिगेशन ही आ रहा है, अगर यही बहुत ज्यादा है। 5-5 बार तुम जीतेंद्र को बुला के थाने में बैठाते हो और उसके बाद बोलते हो कि ताला लगा मिला हमको। तुम्हारे जैसे लोग तो पुलिस फोर्स में को बदनाम ही करते हैं। हमने लिखा है, आप इसी केस के ऑर्डर में लिखा है, इन्हीं सिचुएशंस की वजह से मैंने लिखा है ऑर्डर में, देयर इज नो वन टू पुलिस द पुलिसमैन। कारण यही है कि आप किसी के कंट्रोल में नहीं हो, क्योंकि आप बादशाह हो, थाने के बादशाह हो आप तो। और कुछ होगा तो साहब से विनती कर लेंगे, एक इंक्रीमेंट रुक जाएगा और क्या होगा, वही हुआ। और ऐसी तुमने कितनी हरकतें करी होंगी जो अननोटिस नहीं होंगी अभी तक, और तुम्हारे जैसे कितने और होंगे वहां पर। we will deal with you later, but at इंटायर चालान में केवल 27 के मेमो के अलावा कुछ है ही नहीं सर, कुछ है ही नहीं केस में, केवल 27 के मेमो। और किसी की लड़की गायब हो गई है, 4 साल से 5 साल से गायब है, आज की तारीख में तो 7 साल हो गए, तो 5 साल हो गए, 5 साल हो गए, जिंदा है मर गई है कहाँ है किसी को पता ही नहीं। सर आज जो सब्सिक्वेंट रिपोर्ट पेश की है, कंप्लायंस रिपोर्ट, वहां नया डेवलपमेंट हो गया है। लॉर्डशिप ने डायरेक्शन दिया था कि सोनू के विरुद्ध आपने क्या कार्रवाई की जब उसने एडमिट किया है कि मैंने मर्डर कर दिया। रिपोर्ट ये आई है कि वो इनोसेंट है, उसके विरुद्ध हम कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि वो गलत फंसाया गया। अब सर रिपोर्ट इनने पेश किया, मैंने थोड़ी पेश किया सर। ये रिपोर्ट कहाँ हो? जो इन्होंने आज कंप्लायंस रिपोर्ट पेश की है सर, देखें वो दिखाइए वो कहाँ है। सोनू कलावत के विरुद्ध लॉर्डशिप ने डायरेक्शन दिया था। आज फिर SHO कौन है, इसको दोबारा कब पोस्ट किया वहां पे? 2019 में। नहीं सर, मैं पोस्ट नहीं हुआ सर। कब पहुंचे ये तो बता दो। गुना पहुंचे कब तुम? मैं सर जुलाई 2019 में गुना आया था सर। कब तक रहे यहाँ? मैं जून में आया था सर, और लगभग मैं सर 8 महीने रहा सर। मुझे 2 महीने में सर ट्रैफिक में रहा, बाकी सर मैं इसमें पुलिस लाइन। तुमसे जितना पूछा जाए उतना जवाब दो। जी सर। अभी तो डांट खा के हो, पीछे बैठाया था तुमको मैंने। ज्यादा सफाई दोगे तो और प्रॉब्लम फंस जाओगे। तो तुम्हें गुना भेजा कब गया? जून 2019 में। 19 में। शांत हो जाओ। हाँ अब बताओ तुम क्या, इन्होंने क्या क्या किया उसमें? नहीं सर, मैं शट अप। सर जो कंप्लायंस रिपोर्ट पेश की थी इन्होंने 2019, उस रिपोर्ट में लॉर्डशिप की स्टेटमेंट था सोनू कलावत का। 2000 ये पेश किया 6/3/2020 को। दिखाना भाई। कल की रिपोर्ट है बहुत छोटी। इस रिपोर्ट के साथ में लॉर्डशिप एनेक्चर A1 है, पेज नंबर 10 पे, स्टेटमेंट ऑफ सोनू कथन। यस। हाँ, इसने कहा है कि मैं ले गया था, मैंने रैप किया, इसके बाद मर्डर करके मैंने तालाब में फेंक दिया। सोनू ने कहा है रेप किया, मर्डर किया और तालाब में फेंक दिया। ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड किसने किया है? मिस्टर रघुवंशी सर। हु वाज SHO ऑन 18/11/19? ये 18/11/2019 को रिपोर्ट किया गया। Who was the SHO and SP? उस दिन SIT के हेड बघेल साहब से थे। कौन है बघेल? बस। ये क्या एडिशनल SP है? हाँ सर। सामने आओ।
ये स्टेटमेंट तुमने रिकॉर्ड किया है? जी सर। फिर क्या हुआ इसके बाद? सर स्टेटमेंट की जो तथ्य बताए उसकी तस्दीक के संबंध ये में- बात लिखी है ना इसमें कि उसने फैक्ट कहा कि मैंने उस लड़की का रेप किया, मर्डर किया और नाले में बहा दिया। तालाब में बात ये लिखा है ना इसमें? हाँ, डीमरेज स्टाफ डैम किनारे लिखा है ना लिखा है सर। 27 के मेमो में? ये सर। हाँ, इसके बाद क्या किया आपने? सर ये सोनू कलावत द्वारा जो तथ्य बताए उसकी तस्दीक हमने सबसे पहले की है सर कि जो स्थान बताया वहाँ पर जाके पूरी टीम तलाश की, क्या एविडेंस है उसमें, क्या साक्ष्य वहाँ पर है घटनास्थल पर। मुझे ये बताओ, ये अभय अखंड प्रताप सिंह वहां कब पहुंचा? इसकी स्टेटमेंट बाद ही आया ना, कब पहुंचे तुम वहां पर? मैं नहीं गया तो 6/12/17 के बाद मैं दोबारा कभी नहीं गया। नहीं, तुम गुना कब पहुंचे? गुना में पहुंचा सर जून 2019। हाँ, तो ये इसके जाने के बाद स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ है नवंबर 19 में। मेरे समक्ष नहीं हुआ ना, मेरे को इसमें संबंध में जानकारी। तुम तो गुना में थे ना उस वक्त? यातायात में था सर, कोई पुलिस लाइन में था। ठीक है, अब जितना सवाल पूछे उतना जवाब दो और ज्यादा हमें आंख में आंख देखने की जरूरत नहीं है तुमको। समझ में आया? मिस्टर श्रीवास्तव, आफ्टर दिस स्टेटमेंट व्हाट हैपेंड? कल आज ये तलाशी हुआ। रिपोर्ट पेश की है, ब्रीफ पेश किया है ना, आज में उसने लिख दिया कि सोनू करावत के संबंध में कि उसके विरुद्ध कोई एविडेंस नहीं पाया गया, इसलिए उनके विरुद्ध हम कार्रवाई करने में असमर्थ हैं। अब सर जो जिसपे एलिगेशन इन्होंने लगाए 302 के, वो इन्होंने ही फिर कह दिया कि हम नहीं कार्रवाई कर सकते। जिसपे एलिगेशन मैंने द्वारा कोर्ट में लगाए थे वहां इन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया नहीं। लड़की का आज भी पता नहीं कि अब हुआ क्या, क्योंकि जो उम्मीद बंधी थी कि एक यहाँ पे 302 का केस बनते हुए कोई जांच होगी तो वो जांच यहाँ खत्म होगी, और उधर जीतू के वो बरी होगी। स्टेटमेंट पे उसके खिलाफ चालान पेश कर दिया पेश कर दिया केवल और 27 यहाँ पर 27 के मेमो में स्टेटमेंट आया कुछ नहीं कर रहे, और ये बोलते हैं हम इसके खिलाफ कोई प्रमाण नहीं मिला। नहीं कर पा रहे। ये आज पेश दिस इज द डबल स्टैंडर्ड मेंटेन्ड। इसी केस में सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे आपको। जिसमें चाहा वही सब्जेक्टिविटी आ गई ना, जिसमें चाहा उसमें चालान पेश कर दिया और जिसमें चाहा उसमें चालान पेश नहीं किया। धारा 27 का मेमो दोनों में है। एक बोलता है मेरे साथ में थी तो उसको तो चालान पेश कर दिया, एक बोलता है मैंने उसका रेप किया, उसका मर्डर किया, उसको नाले में बहाया, उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है आपके पास। ये आपका कंडक्ट है। और ये एडिशनल एसपी है, क्या नाम है तुम्हारा? सर तेरसी हैं बघेल। दे आर द पर्सन्स फिट टू बी कंपल्सरी रिटायर्ड बाय वे ऑफ पेनल्टी or to be the government can be still be more harsh while dismissing them from service. These are the black sheeps in the police department who are defaming the police establishments. Mr. Verma, you must take a call. Remove these persons with harsh penalties. They don't deserve to be in police force. क्यों नहीं किया चालान पेश तुमने? और क्यों किया तुमने चालान पेश जितेंद्र वाले केस में? कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास। ये मर्जी है, जिस केस में चाहे उस पर चालान पेश करेंगे, जो चाहेंगे नहीं करेंगे। ज्यादा संगीन अपराध तो इसका था जिसने खुद स्टेटमेंट दिया। और आज जस्टिफाई कर रहे हो यहां पे आकर के, पूरा अमला आके बैठा हुआ है यहां पे। ये हरकतें हैं आपकी, हरकतें ही कहूंगा मैं तो इसको। ये बोनाफाइड डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी नहीं है, हरकत है आपकी। क्लियर कट 201 का ऑफेंस है।
Elimination. Destroy of evidence. Yes, elimination of evidence. Clear cut offense, sir. Huh? And he was SIT member or chief, He was head of the. head of the SIT. And then you say, sir, we have constituted 5 SIT or 3 SITs? 3 SIT. 3 years. 3 SITs. ये रिजल्ट है आपके SIT का. तो थाने में क्या होता हो? अब बताओ जरा, ये अखंड प्रताप सिंह के खिलाफ बताओ क्या क्या है तुम्हारे पास? ये लोग तो इनके खिलाफ वही है कि इन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन किया ही नहीं. जो इंटायर मैंने वो जब 18 में था वहां पे. Yes, Lord. हाँ उसके बाद इन्होंने चालान पेश कर दिया. हाँ और चालान में केवल धारा 27 का वेमो आया था. हाँ. मैं लॉर्डशिप को ये बताना चाह रहा हूँ कि इन्होंने अरेस्ट ही क्यों किया जब कुछ नहीं किया इन्होंने, कुछ नहीं किया. कुछ नहीं किया. Take note of these facts. अब सर उसके In one case, no steps were taken in the matter of investigation, and challan was filed. Allegations you have heard against him. You have seen the court order sheet. You have seen the conduct of the SP, not for submitting a report of inquiry. He has not even touched the papers. And then, what was the justification of send this man again, maybe in a different office? What was the justification? What was so much of Guna was in need of such an outstanding officer? From where was he sent to Guna again? Gwalior to Guna. From Gwalior to Guna. Why was he sent? Let us understand this fact also. Why was he sent here? Well, there at Guna. And that too only after 6 to 7 months. Mr. Raghuvanshi, you also make note of it. On the next date, we want to hear all these facts. We must reach to a logical end, no matter how much time we spend on this case. But we are really at pains. A poor man can only lament. Where that girl would be, in what shape she would be, whether she is alive or not, we do not know. Perceive a situation as if she was our daughters. Now, what is your steps to be taken now? Not so far as the statement made by the other side that we have said that there was nothing against that, my lord. That is, we have never said, my lord, in our status report. All said and done, you have not taken any steps against Sonu also. that Now, I can what are identify. you going to do? My lord, so far as Sonu is concerned, my lord, we applied for narco test. That was rejected. Then we applied. to the I'm asking you what steps you want to take now. Now, my lord, so far as the this Sonu is concerned, my lord, How you want to go about it now? You have let off Jitendra, he got a seal of acquittal from the court of law, he is now scot-free. Sonu, you have given him the warm send-off. so far as, my lord, Jitendra is concerned, my lord, we have. I'm not talking about anybody. Sir, I'm only concerned with the status as regard the corpus. You this- come back to the point. Give me how you are going to go about to find out the corpus of the missing girl, live or dead. so far as, my lord, because that this Sonu's confession is there, my lord. You please give us the status whether she is living or she is dead. Then we will start taking action. Please give us a report if she is living or she is dead. And come back. We are going to reach to a flawless logical end. Yes. Because we owe accountability towards public at large.
these persons have reposed faith and trust upon us, and we as constitutional authorities owe an obligation to the public to protect them, to take serious action against all such erring officials who were involved in this case, and let it be an example for all the officers in the state as to what are they supposed to do, how they are supposed to behave, and how are they supposed to conduct themselves in public domain. Mr. Verma, it's not a case of issuing charge sheet. It's a matter of changing their mindset. Don't create fear, but there should be deterrent steps. All these, what I'm saying is, it should come in their routine discharge of duties. The mindset should be such that I am a public servant. Mindset should be that I am a public servant. I should not forget I am a human being. I must treat others also as a good human being. And God has given you this chance to maintain law and order and public order. Discharge this duty, ensuring good to the public at large, protecting them against invasion of their life and liberty and property, not to exploit them, not to torture them, not to embarrass them, not to deprive them. This is the duty of a police officer. People should not have a fear psychosis because they are going to police station. They should be protected. They should be extended helping hand. This is what is expected of you people. You take oath also, I believe. You take oath once you qualify IPS. Why should you not imbibe that culture which a person after taking oath is supposed to have? You forget everything once you are posted as SP. I don't want to comment upon your status as SP, but I can always comment upon the way you have conducted yourself as SP, which is unbecoming of a public servant. See, if a person cannot justify the obligations which he owes towards public while holding the post, does he qualify himself to hold that post? And that was not done on either situations, on either fronts rather. Neither there is an inquiry by the SP, nor there is satisfactory investigation. I mean, these persons who are alleged to be member of SIT, probably because of their experience in police services, whosoever was there, and this is the quality of investigation you have done. No, you can smile it away because naturally you are defending the government, so you have to smile it away. But we are taking on a serious note. Mr. Counsel, you have to be very serious. And this is one case. Mr. Counsel, this is one case where we could lay our hand, this man could gather courage to come to the High Court. Otherwise, poor persons like the petitioner can only lament because neither he has money power, nor he has political power or muscle power. मेरे पास तो मैं अकेला ही हूँ, मैन पावर भी नहीं मेरे पास. And this man can only lament but for the court's intervention. And there would be hundreds of thousands of such cases across the state, and no wonder in India itself, in entire India.
different states where such kind of grievances go unheard. There's only one case which has come before this court of this nature. There would be thousands of cases of this nature. That is why on that day I said that nowadays investigation only comes to full stop after recording police statement of the accused. This is what disturbs us. Despite court order, your SP has conducted himself in a manner unbecoming of a public officer. If these officers do not have respect for the court orders, what kind of fairness I can expect from them in the matter of investigation and discharge of their duties? Tell me one thing. If this man is so arrogant that he remains indifferent to the High Court order and asks an additional SP to prepare a report which runs into 10 pages, which has no meaning. And he has the audacity to come to the court and say that this is the compliance. There is no remorse. Because he is SP. Because you are an IPS officer, posted as SP, you are above the law. You are above court orders. You can afford to remain indifferent to the High Court order. And you opened up your argument trying to show the bona fides of the police. Mr. Counsel, we are not concerned. See, it's a matter of habeas corpus. No, ultimately we have to see your bona fides. And in all fairness, your instruction should have been, if there is any lapse. No, don't argue the lapse. You have to, Mr. Counsel. All said and done, before that, and all right, then, yes, very well. Now you have started from July 17. Now, probably you will take the whole day. No, since you started from July, now look at, answer these questions which the London Council for Petition has raised. And the court has raised. Despite 5 chances, you have not apprehended, you have called Jitendra at police station, allegedly recorded his statements. Those statements are not on record. 5 times in the month of August. And after taking police remand, you have taken him for a walk to his sister's house, found a lock, came back. This is the kind of investigation you have done. And there is allegation against SHO. They was trying to strike a deal between Jitendra and the father of the missing corpus. On which court had taken exception, because the counsel, while filing an affidavit, had taken due care of the factual narrations. There is no denial of that fact. And that's why the court has taken a strong exception to the conduct of the SHO. And for that reason, the SP was required to hold an inquiry.
and that was not done.